Hey friends, welcome back to my channel. This side it's the moon जो आप सबको अपने चैनल पर स्वागत कर रही है। ओके तो एज यू गाइस नो मी कि मैं एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स बनाती हूँ, तो जो भी खास होता है उसे आपके साथ शेयर करती हूँ। सो टुडे आई एम गोना शेयर दिस नो मेकअप लुक विथ यू गाइस, क्योंकि जैसे कि हमने पहले बताया था दैट आई एम नॉट बीइंग एबल टू गो आउटसाइड टू विजिट एनी प्लेसेस। तो आज कहीं पर जाना हो रहा है, बट घूमने नहीं, किसी काम से। तो वहाँ पर मैं आप सबको ले जा नहीं पाऊँगी। For that reason, I have been coming up with this makeup tutorial कि कहीं पर आपको बाहर जाना हो, then how you're supposed to put this particular makeup which looks a complete matte, लेकिन किसी को ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा कि आपने मेकअप लगाया है। So this is a no makeup look. This is a nude makeup. Okay, तो nude makeup tutorial के साथ आज हम आप सबके लिए आए हैं। And as you guys know me, मैं कहीं पर भी ऐसे बिना मेकअप भी आप सबके सामने आ जाती हूँ। तो मेरे पास ये जो एक बैग है, ये एक बैग, इसी के अंदर है हमारा जो सारा सामान मेकअप का। तो with lesser thing, with the minimum things, how you're supposed to get this super no makeup look will be taught in this particular video. तो इसे आप बिल्कुल स्किप ना कर देखिएगा, because I'm going to give you some smaller tips, कि कैसे कम सामान के साथ आप इस particular makeup को create कर सकते हैं, you can create this particular look. So let's proceed. तो ये आप सबको उल्टा पुल्टा लगेगा, बिकॉज आई एम यूजिंग दिस सेल्फी कैमरा। आपके लिए पिक शेयर कर दूंगी और हो सके तो लिंक भी शेयर कर दूंगी इन प्रोडक्ट्स का बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड ये जो चीज़ें हैं हम अपनी स्किन पर पहले लगाते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ टाइप ऑफ मॉइस्चराइजर, ऑरिफ्लेम का डे क्रीम है, एंड दिस इज़ क्वाइट गुड। और ये जो जब हम ये अपने फेस पर लगाते हैं तो मतलब क्या होता है कि ये एक न्यूडी फिनिश देता है अपने मेकअप को। इट ऑब्जर्व्स द मेकअप इन सच अ वे दैट पर्टिकुलर मेकअप डज नॉट लुक वेरी शाइनी और वेरी ग्लोई, टू मच ग्लोई, कि सबको पता चले कि इसमें कुछ होता है फेस पर, एंड इट्स लाइक पैथेटिक व्हेन दैट टाइप ऑफ लुक इज आउट। तो जब आप मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं अपने फेस पर, कोई भी क्रेम यूज़ करें, हम सेरम से अच्छा हमें क्या लगता है कि मतलब क्रेम होता है, बिकॉज डायरेक्टली पुटिंग ऑन अ केमिकल ऑन योर फेस बिफोर हैंड इज़ नॉट दैट गुड। तो हमें क्या लगता है कि कोई भी ऑर्गेनिक क्रीम हो, जैसे कि ये भी ऑर्गेनिक है ऑरिफ्लेम का, और जो हम यूज़ कर रहे हैं सनस्क्रीन, ये भी ऑर्गेनिक है। आई एम गोना मिक्स दीज टू, और इन दोनों को मैं अपने फेस पर लगाऊंगी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट माई फेस फ्रॉम डायरेक्ट डैमेज ऑफ केमिकल्स। यानी जो भी आप मेकअप यूज़ करेंगे उस पर तो केमिकल तो होगा ही होगा। तो अगर आप ऑर्गेनिक क्रीम यूज़ करेंगे तो आपके फेस को डायरेक्ट डैमेज से वो प्रोटेक्टेड रखता है। ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम गोना यूज दीज टू क्रीम्स। आई टोल्ड यू दिस इज ऑरिफ्लेम एंड दिस इज जूस। तो इतना ऑरिफ्लेम का क्रीम हमने लिया है, बहुत ही ज़्यादा कम लेते हैं हम, बिकॉज आई डोंट लाइक द ग्रीजी फिनिश ऑन माई फेस, इट इरिटेट्स मी। बहुत ही ज़्यादा कम लूँगी, एंड देन नाउ आई एम गोना पुट जूस ऑन इट। कि दोनों को एक ही साथ मिलाएंगे तो क्या होगा कि फेस पर नॉन ग्रीजी प्लस सनस्क्रीन एक ही साथ होगा, एंड देन ऑल्सो इट विल मॉइस्चराइज योर स्किन एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेजेस। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ लिया है, एंड दिस इज द स्क्रीन। नाउ आई एम गोना मिक्स देम अप दिस वे। फेस पर लगाने से पहले यहाँ पर सबसे पहले लगा लेते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द पोर्शन वी मिस नाउ। सर्क्यूलर मोशन, ओके, सर्क्यूलर मोशन ऐसे, टुवर्ड्स द अपर डायरेक्शन। ध्यान रहे कि आप इसे ऐसे मतलब जो करते हैं ना ऐसे, ये नहीं करना है। दिस विल लीड टू योर डैमेजेस ऑफ योर नेचुरल स्किन, यानी आपके जो गाल है वो नीचे आ सकते हैं। दैट सीम्स सो फनी, बट सच ही बोल रही हूँ। कहने का मतलब क्या है कि मतलब आपकी जो नेचुरल स्किन जो बना है, जो फेस का वो जो गुलाई है, वो सारा जो है वो बिगड़ जाएगा। Just give it a slight dab after you give it a circular flow. This is a sort of light massage. After that, this particular bag is gonna come into play, यानी इस बैग से हम कुछ निकालेंगे, and this is the concealer, Swiss Beauty concealer on the shade 4. ओके, ये हमारे स्किन टोन से मैच करता है। तो इसे हम क्या करेंगे,
लिफ्टेड लुक बनाना है हमको, न्यूडी मेकअप है इसीलिए हम इसे ज़्यादा नहीं लगाएंगे, आपको पोतना नहीं है. सो यू जस्ट पुट इट हियर एंड देन हियर एंड देन स्लाइड ओवर हियर, यू नो. भाई ज़्यादा लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये हल्का सा आई शेडो जैसा भी दिखता है. एंड देन आई वुड सजेस्ट यू टू फर्स्ट गो विथ ब्लेंडिंग दिस ओनली, देन गो विथ द अदर आई. कुछ इस तरीके से ये जो मिरर है ये हमने जयपुर से लिया था व्हेन आई हैव बीन गोइंग देयर फॉर एन एक्सकर्शन. तो आपको ये जो है पहले तो ऐसे मतलब आप स्वाइप कर सकते हैं कंसीलर को, बट देन आई वुड सजेस्ट यू आफ्टर डूइंग दैट यू जस्ट गिव इट अ डैप. आपको इसे डैप करना है फिर कंसीलर ब्रश. लेकिन हम जो है ब्रशेस के मामले में जो है कमज़ोर है. एंड देन आई गेट सो इरिटेटेड विद दिस ब्रश थिंग, यू नो. पहचान में नहीं आता कि कौन सा ब्रश क्या है. सो गो विथ व्हाट you find it easy. So concealer brush. Difference. The lifted look, you know. After the concealer is done, I'm gonna go with foundation. तो ये भी Swiss Beauty का high coverage foundation है. This is waterproof. Okay, and the shade is 02 Rose Blush. Okay. तो ये आइवरी कलर है इनफैक्ट. ओके, दिस इज द थिंग आई यूज. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप कंसीलर यूज़ करें तो कंसीलर आपके स्किन टोन से एकदम से मैच करना चाहिए. ओके, दैट इट मस्ट नॉट लुक वेरी वाइट कि यहाँ पर काला लगेगा और यहाँ पर सफ़ेद. नो, कंसीलर आपके स्किन टोन से मैच करना चाहिए. एंड देन फाउंडेशन मस्ट बी ऑफ लिटिल फेयर शेड देन दैट ऑफ योर स्किन टोन. ओके, तो ये हल्का सा यू कैन सी कि हल्का सा मेरी स्किन टोन से और भी ज़्यादा फेयर है, आइवरी शेड है. सो आई एम गोना यूज़ दिस. उल्टा हाथ में यहाँ पर ऐसे मुट्ठी कर लीजिए और बस स्लाइट थिंग, यू नो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई कवरेज होता है ना. एंड आई डोंट लाइक द ग्रेटर कवरेज और बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद जो दिखते हैं आफ्टर दे पुट ऑन द मेकअप. दैट इज़ नॉट सपोज टू बी डन. So I had been purchasing this particular brush from the market. It's for this is the powder brush. Okay, you can also put some compact or powder. Also, it has a blender. So I'm going to blend this foundation with this particular blender. And always remember, you're not supposed to drag the foundation. You're supposed to dab it. First, just do this way. Do it this way, okay? And then you just go with this. The concealer, please be sure that you're gonna dab very lightly so that these two things blends to its fullest. Glow you're getting after using your foundation and concealer, and after it blends to its fullest, like this here. Yeah, please take it to the upwards direction, and be specific that you're not going to use lots of foundation over here. Okay, just be like just if you put 3 layers here, then put 1 layer here. यानी यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही बार फाउंडेशन को यूज़ करना है. यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो आपका जो नोज़ है वो और ज़्यादा ग्लोवी लगेगा. देन इट विल गिव अ परफेक्ट शेप. ओके, सो आफ्टर फाउंडेशन आई एम गोना यूज़ कॉम्पैक्ट. ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा शाइनी लग रहा है एंड आई डोंट वांट दिस शाइनी लुक. आई वांट दिस टू बी क्वाइट मैट. ओके, मैट लुक चाहिए मुझे. सो Maybelline New York's Fit Me Compact in the shade Ivory. So as I told you that I have this brush which is a powder brush as well as contains a blender. So I'm going to use this powder brush. Take
a very high quantity first, just dab it very nicely this way, and then just light, see how it's gonna give this matte finish. The things which were shiny now is gonna be matte. So this is the thing how you set. So guys, after putting some foundation, we're gonna use tint. तो आपके पास कोई भी लिपस्टिक हो, अगर आपके पास चीक टिंट हो तब भी ठीक है. एंड आई एम गोइंग टू यूज अ लिपस्टिक. न्यूडी मेकअप है तो बहुत ही ज़्यादा कम. एज यू कैन सी दिस इज़ द न्यूडी मेकअप. आपको बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ करना है फ्रेंड्स, बिकॉज this is a nudie makeup and your makeup must not show to everyone. I'm gonna use a brush and then slightly once again towards the upper direction. cheekbone पर लगाना है आपको इसे. okay, that way you'll get a very good finish. see just slight one. मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, so I'm just dragging. You can put some tint over here and then you can just blend it. इससे क्या होगा कि एक नेचुरल सा ग्लो लगता है. Okay, it does not look very artificial. See, so this is the blush that we are getting. Up next, I'm going to work on my lips. So I'm going to use this Oriflame lip liner or Hilary Roda liquid matte lipstick on the shade 5. जो लिप लाइनर था उससे थोड़ा सा अपने लिप्स को जो है एनलार्ज किया है, बिकॉज माई लिप्स, आई फील दैट माई लिप्स आर वेरी स्मॉल, सो आई एम गोना एनलार्ज इट. This was the thing, matte lipstick अब हो गया है, लग चुका है. So if you have been noticing, तो हमने आप सबको एक चीज़ को बताया था पहले, that you are supposed to put a little bit more amount of concealer here on your eyelid, तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा amount of concealer यहाँ पर लगाया था. तो उससे क्या होता है कि मतलब एक naturally आई शैडो टाइप ऑफ लुक यू गेट, बिकॉज यहाँ पर फाउंडेशन की वजह से थोड़ा सा लाइटर शेड बन जाता है और यहाँ पर थोड़ा सा डार्क, एज यू कैन सी. तो ये जो न्यूडी मेकअप है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है, दैट यू डोंट हैव टू पुट एक्स्ट्रा आई शैडो ऑन योर फेस एंड देन सी इट गिव्स यू अ स्लाइट न्यूडी फिनिश. तो उसके लिए अब हमें कुछ करना है नहीं. सो दैट इज द रीजन व्हाट आई एम गोना डू. आई एम गोना गेट दिस एक मस्कारा. ये भी स्विस ब्यूटी का मस्कारा है. आई एम गोना लिंक इट बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू गाइस टू परचेज. तो इसी के साथ 1 2 3 से वॉल्यूम में लाना, राइट. सो दिस इज अ वाटरप्रूफ मस्कारा. इसे हम मिरर पर लगाएंगे बिकॉज ऑन द स्क्रीन आई एम नॉट बीइंग एबल टू अप्लाई परफेक्टली. I'm going to crisscross my hand this way because I find it easy. So I'm on with my mascara.
mascara. You can see the volume here, it seems quite voluminous now. So this is the final makeup look, the no makeup glow that I have been receiving after doing this Nude makeup. तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एक रिकैप दे देती हूँ दैट व्हाट थिंग्स डू यू नीड. कि एक मॉइस्चराइज़र चाहिए, यू नीड अ कंसीलर, प्लीज़ कंसीलर इज़ अ मस्ट एंड मॉइस्चराइज़र इज़ अ मस्ट. अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है देन नो इश्यूज़, यू कैन यूज़ द कॉम्पैक्ट पाउडर दैट आई हैव बीन यूजिंग. एंड देन क्या चाहिए, लिपस्टिक चाहिए आपके शेड जो आपको अच्छा लगे. ओके, सो गो फॉर इट. सो दिस वाज द इवेंट फ्रेंडली मेकअप, इसे हम इवेंट फ्रेंडली बोलते हैं क्योंकि ये कहीं पर भी फिट हो जाता है. विद दिस मेकअप यू कैन गो टू योर कॉलेज, मार्केट, फॉर शॉपिंग, एनी इवेंट यू विल बी एबल टू अडेप्ट विद दिस पर्टिकुलर मेकअप. इट ग्रोज योर पर्सनैलिटी एंड दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू डू व्हेन इट कम्स टू मेकअप. न्यूडी मेकअप कुछ तो है चेहरे पर लेकिन कुछ भी नहीं है. दिस टाइप ऑफ मेकअप इज क्वाइट ग्रेट. तो ये टैलेंट होता है. तो ये सीक्रेट हमने आपके साथ शेयर कर दिया कि 4 मेन चीज़ और उससे ज़्यादा अगर आप किसी भी चीज़ से कंफर्टेबल हो देन यू कैन यूज़ इट. लाइक आई यूज द फाउंडेशन एंड द लिप लाइनर और समथिंग लाइक दैट. बट देन बेसिकली 4 things, okay? Moisturizer, concealer, lipstick and the compact. With that much it's done. अगर आपके पास voluminous lashes है then you don't need mascara. And if you live in a gloomy place like I do then you don't need a setting spray that I did not use. अगर आप गर्मी में रहते हैं, प्लेन साइड में रहते हैं then please do go for a setting spray because वो essential होता है वहाँ पर because we sweat a lot in the plains, okay? तो था बस इतना. So this side was the moon. I hope you liked this video. Please give me your feedbacks in the comment section and please do not forget to subscribe to my channel for more updates. इसी के साथ bye bye. See you all in the next video. Love you.